Hello there, welcome back. Now in this video we are going to see some numericals based on the conversion of point from one coordinate system into the other coordinate system. In previous video we have seen that if any point is given in one coordinate system, how to convert it into the other coordinate system, that we have already seen theoretically. Means we have seen only the formulas, we have not seen any numerical based on that. तो उसमें हमने देखा था कि अगर आपको पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है और उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, या पॉइंट अगर आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है और उसको आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, इसके रिलेटेड फॉर्मूलेज ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में देखे हुए हैं. तो इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल, how to convert that point from one coordinate system into the other. In this case, simply you have to memorize the formulas. So if you know the formula, then you can easily convert the point from one coordinate system into the other coordinate system. So let us go and read this numerical and try to solve this numerical. Sometimes in university examination also, such a type of numericals will be asked, or there are some numericals based on the other topics in which you can require to convert the point from one coordinate system into the other coordinate system. So for that I have started from a simple numerical of conversion of point from one coordinate system into the other coordinate system. So first read the numerical and try to understand what is given and what you have to do. Now in this numerical, if you can see here, give the Cartesian, this is the first numerical, forget about this 8 numerical, this is numerical number 1, right? So give the Cartesian coordinates of the point C. Point C आपको दिया हुआ है, and if you see here, this point C is given to you in which coordinate system. So if you can see how to identify, मैंने already बताया है कि अगर कोई point के coordinates दिए हुए हैं और उस कोऑर्डिनेट में अगर एक भी एंगल नहीं है, इसका मतलब वो पॉइंट आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है. अगर कोऑर्डिनेट्स में अगर आपका एंगल है, एक ही एंगल है, इन दैट केस दैट पॉइंट इज इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. और कोई पॉइंट में दो एंगल्स अगर आपको दिए हुए हैं, सो दैट पॉइंट इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. So if you can see here, point C is given to you and here you observe that there is only one angle. इसका मतलब ये जो point C दिया हुआ है, this point is given to you in cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. So you have to convert this point in Cartesian. See part A. Give the Cartesian coordinates of point C. And इस point C के Cartesian coordinates आपको देने हैं. इसका मतलब you have to convert this point in Cartesian coordinate system. So let us first solve this first and then we will go for the second. So given point is this one. It is in cylindrical coordinate system. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. It is in cylindrical coordinate system. So if we want to convert the cylindrical coordinates into the Cartesian coordinates, we know the formula. In Cartesian coordinates, the point will be represented as x, y, z, right? So we want to find the x coordinate, we have to find the y coordinate, and we have to find the z coordinate. So the x coordinate can be expressed in terms of the cylindrical coordinate as x is equals to rho cos phi. ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था. x is equals to rho cos phi. तो रो और phi की वैल्यू आपको दिया हुआ है. तो गिवन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो है उसमें रो क्या रहता है हमारे पास, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है. दिस इज रो, दिस एंगल इज फाई एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज जेड. सो रो, फाई एंड जेड, these three values. तो रो इज 4.4, फाई इज -115 degrees and z is equals to 2. तो x is rho cos phi, तो I will put the value of rho and phi, तो 4.4 multiplied by cos of -115 degrees. So if I will calculate this value, so x coordinate is coming to be -1.86. Similarly, to calculate the y coordinate, we have to use the formula y is equals to rho sin phi, right? So rho is 4.4,
phi is minus 115 degrees, so put the values, and this y coordinate is coming to be minus 3.99. You can also consider approximately equals to 4, right? But I will keep as it is minus 3.33. And for conversion, the z coordinate of the Cartesian coordinate system is equal to the z coordinate of the cylindrical coordinate system. तो z की वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, so z is equals to 2. इसका मतलब ये जो cylindrical coordinate में जो पॉइंट दिया हुआ है, that is converted into the Cartesian coordinate system. You have to write down the values in sequence x, y and z. So x is minus 1.86 we have calculated, y is minus 3.99 and z is equals to 2. So thus we have converted the point from cylindrical coordinate system into the Cartesian coordinate system. So let us read the B point. Give the cylindrical coordinates of point minus 3, 2.6 and 3. So if you observe here this point, right? Suppose let us consider that this point is D. ठीक है? So ये जो कोऑर्डिनेट दिया है इसमें कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं, इसका मतलब this point is given to you in Cartesian coordinate system and you have to convert this point into the cylindrical coordinates. And lastly we have to specify the distance from C to D. ये point C और ये point D है, तो दोनों के बीच का आपको distance find करना है. तो पहले क्या करते हैं, B part solve कर लेते हैं. B part में आपका Cartesian coordinate दिया हुआ है, तो you have to convert it into the cylindrical coordinate. इसका मतलब जो point दिया हुआ है आपको x, y, z के फॉर्म में, right? If you can see here, D point is ये, this is nothing but my x value, this is my y value and this is my z value. तो सिलिंड्रिकल कन्वर्ट में करने के लिए आपको D कौन से फॉर्म में लाना है, आपको रो, फाई और z के फॉर्म में लाना है, राइट? तो रो का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था, रो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस फॉर्मूला. तो x इज माइनस 3.1 है, इसलिए माइनस 3.1 स्क्वायर प्लस y इज 2.6, तो आई हैव पुट हियर एंड इफ आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यू तो इट इज कमिंग टू बी 4.05. सिमिलरली फाई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूलेज बताए थे. फाई का फॉर्मूला क्या बताया था, एक बताया था हमने tan इनवर्स ऑफ y बाय x और दूसरा बताया था हमने 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, राइट? ये दो फॉर्मूला क्यों, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे फाई का, tan इनवर्स ऑफ y बाय x व्हेन द x इज पॉजिटिव. x अगर आपका पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन x इज नेगेटिव, राइट? तो सबसे पहले जो भी आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट है उसको पहले ऑब्जर्व कर लेना है. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अगर आप देखते हो तो ये निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू है इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x. तो देखिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x. 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज 2.6 एंड x is minus 3.1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया है and it is coming to be 140 degree. Now you have to remember that you have to calculate this value in degree mode on your calculator. Don't use the radian mode. अगर radian mode अगर आप यूज करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा. तो कौन से मोड में आपका कैलकुलेशन करना है ये प्रॉपरली आपको पता रहना चाहिए, राइट? तो ये फाई का वैल्यू हमको मिल गया है 140 डिग्रीज एंड z इज इक्वल टू, z ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, द z कोऑर्डिनेट ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे बोथ आर सेम. तो z इज इक्वल टू माइनस 3 ये भी पुट किया. सो दैट्स व्हाई जो पॉइंट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था उसको हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो, फाई और z इस सीक्वेंस में लिखना है. तो रो इज 4.05, फाई आया हुआ है हमारे पास 140 डिग्री एंड z आया हुआ हमारे पास -3, राइट? तो इस तरह से हमने पॉइंट कन्वर्ट किया कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल. थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D. तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दैट इज डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, plus z1 minus z2 whole square, right? So that is the difference between z coordinate whole square. तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था. तो इसका मतलब अगर आप देखते हो इस फॉर्मूले में x1 x2
y1 y2 z1 z2. So x1 y1 z1 they will be the coordinate of the first point and x2 y2 z2 will be the coordinate of the second point. तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हो तो योर बोथ द पॉइंट विल बी रिक्वायर्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना है आपको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना है. तो ऑलरेडी डी पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में माइनस 3.1 2.6 -3 और सी पॉइंट अगर आप देखते हो तो सी पॉइंट आपको दिया था सिलिंड्रिकल में, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो सी और डी दोनों पॉइंट आपको लेना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो आई विल कंसीडर दिस बोथ द पॉइंट सी एंड डी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन आई विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी. It is given by square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square. The distance between point C and D I will represent by d of CD. Yeah, also you can represent the mod of vector CD like this also. Okay? But I will use this simple formula. Distance between the two points C and D is given by this one. So x1 x2 क्या है हमारे पास? x1 y1 पहला पॉइंट है x1, this is y1 and this is z1. दूसरा पॉइंट है इसको बोलेंगे हम x2, दिस इज y2 कोऑर्डिनेट एंड दिस इज z2 कोऑर्डिनेट. नाउ जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस, राइट, एंड यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, राइट. तो x1 इज 1. it will be minus 1.6, right? So let me check. Yes, it is minus 1.6. So here this point is minus 1.6, right? माइनस ऑफ माइनस 3.1, तो ये हो जाएगा माइनस 1.86 प्लस 3.1 हो जाएगा, प्लस y1 इज माइनस 3.99 माइनस 2.6 उसका होल स्क्वायर प्लस z1 इज 2 माइनस ऑफ माइनस 3, तो इसलिए हो जाएगा प्लस 3 उसका होल स्क्वायर. तो डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये मिल जाएगा आपका 8.36 मीटर्स. So in this way, by applying the distance formula, you can easily calculate the distance between the 2 points. But you need to remember that both the coordinates should be in Cartesian coordinate system. Because हमने जो formula लिखा हुआ है ये Cartesian coordinate system का formula लगा हुआ है. ठीक है? So I hope you might have understood this numerical. So that's all for this video. We will see some more numerical on this conversion of point in next video. So thank you very much.